Hello and welcome to your S.St class, my dear students. Today, on this special date of 5th of September, on Teachers' Day, first of all, I would like to thanks for your wishes which you sent to me. Today, we will start a new chapter from your different book, that is your history book. In previous couple of lectures, we have covered the chapters of geography and civics. Today, from your history book, we will be covering chapter number 5. Okay, the name of the chapter is When People Rebel. Okay, it's about the that incident of 1857, the first war of Indian independence. It was called so, it was named so. What happened during the war was taking place and what were the after consequences. So let's start with the first point, policies and the people. What was the reason why such an incident was starting to take place? ऐसा क्यों हो रहा था कि लोग उस समय विद्रोह की स्थिति में थे, एक फाइट की स्थिति में थे? वाई वर दे वर सेट ऑन द वॉर? बिकॉज रीजन बिंग दैट एट दैट टाइम द रूलर ऑफ इंडिया वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर राज कर रही थी. तो उस समय के जो हमारे इंडिया के जो द किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स, यानी दैट मीन्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो, दे वर ऑल अपसेट बाई देयर ओन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस. उनके अपने अपने कारण से, अपने अपने रीजंस की वजह से वो ब्रिटिश राज से नाखुश थे. दे वर अनहैप्पी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. Okay, so let's go into more depth. Nawab loses their power. The Nawab and Rajas at that particular time, they were losing their power gradually. How? Means in the mid 18th century, Nawab and Rajas were, slowly giving up their entire thing. कैसे? कभी तो उनसे उनकी सेना ले ली जाती थी. Their army was being taken away from them. Their jagirs were taken away from them, their provinces were taken up away from them, their territories were taken away from them. जो एरिया जहाँ पर वो राज करते थे वो चीजें उनसे एक एक करके वापस ली जा रही थी. उनके फोर्ट्स, उनके किले और उनकी चीजें, रियासतें उनसे एक एक करके अंग्रेज वापस लेने लग रहे थे. Many ruling families try to negotiate with the Britishers. कई ruling families ने the people who were ruling from previous many years, they negotiated with Britishers. उन्होंने ब्रिटिशर्स से निगोशिएट करने की भी कोशिश करी, संधि और समझौते करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका कोई हल परिणाम नहीं निकला. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे. क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने एक बेटा गोद लिया था अपने हस्बैंड की डेथ के बाद. ही टुक अ सन that was being adopted after the death of his husband, but Britishers didn't consider that boy as a future king. अंग्रेजों ने उसको भविष्य का राजा स्वीकार नहीं किया, झांसी का भविष्य का राजा स्वीकार नहीं किया, due to the certain policies that was being running, like doctrine of lapse, as we have discussed in the previous chapter. Tantya Tope, again, he became the victim of these such policies. His father, Peshwa Bajirao II, when his father passed away, he was refused by the Britishers to receive the pension. उनके फादर के देहांत के बाद ब्रिटिशर्स ने पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया था कि तांत्या तोपे को पेंशन मिलेगी अपने फादर के डेथ के बाद भी, लेकिन उसके बाद वो लोग अपने समझौते से दे डिनाइड अवे एंड दे रिफ्यूज टू पे एनी सच टाइप ऑफ मनी, एनी सच टाइप ऑफ पेंशन टू तांत्या तोपे. So he was again the culprit. There were few more reasons. We will be continuing the same video. Okay, so be with me and let's see what all is add. Okay, dear students, let's continue the name of those 13 rulers. There's just check in this particular nomenclature. The personality that I was talking about was not Kantya Tope, it was Nana Sahib. Nana Sahib, the son of Peshwa Bajirao II. Nana Sahib was denied by the Britishers later on for getting any type of pensions from the side of Britishers. Earlier, he was said that he would be receiving, but after the death, when the things
changed, then Britishers refused to pay any such pensions. Okay, fine. Then the next bigger province of Uttar Pradesh was United Provinces. In 1801, Awadh was, uh, you know, you can say annexed to subsidiary alliance. Subsidiary alliance के तहत 1801 में अवध एरिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया था और 1857 में completely when Lord Dalhousie was the Governor General, he totally took over this area, claiming that the rulers of Awadh were not able to maintain the army. They were not able to keep law and order in that place. That place was not being properly managed. उन्होंने ये कह के अवध को टोटली ले लिया अवध के नवाब से जो वहाँ पे रूलर थे कि अब उनसे अवध का जो एरिया है वो सही से रूल नहीं हो पा रहा है, लोग वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी एज अ रूलर. नेक्स्ट चीज सबसे बड़ी द मोस्ट big thing that happened, the Mughal ruler who were overall the ruler of the country still by the name, as far as the name was concerned. मुगल डायनेस्टी उस टाइम तक भी पूरी इंडिया का एक सिंगल रूलर कही जाती थी. तो व्हाट ब्रिटिशर्स डिसाइडेड इज आफ्टर ड्यूरिंग दिस टेन्योर कि उन्होंने धीरे धीरे दे स्टार्टेड रिमूविंग द नेम ऑफ Mughal emperor from the coins. The coins that were being minted, that were being stamped, उसमें से मुगल emperor का नाम हटा लिया गया. Okay. In 1849, Dalhousie he announced that the residence of Mughal emperor's family, it will be changed away from the Red Fort of New Delhi. They will be shifted somewhere else. Fine. In 1856, the next Governor General of India, Lord Canning, declared that Bahadur Shah Zafar would be officially the last Mughal emperor king for India. After the Mughal emperor, whosoever his son and grandsons are, they will not be considered as king. They will not use the title of king. They will just use the title of prince. Okay. उनके आगे राजा का या बादशाह का टाइटल नहीं लगेगा, जस्ट उनके आगे प्रिंस का टाइटल लगेगा. तो टोटली मुगल एम्परर की पावर को कट ऑफ करने की प्लानिंग तैयार हो चुकी थी. All the things were ready to cut off the name of Mughal dynasty from India, the Mughal power from India at that particular time. So let's see at what was the effect on other areas and other sections of the society. Okay, let's continue the topic and let's see what was the impact on one more major section of the society, the peasants and the sepoys. Peasants, the small farmers, वो किसान जो थोड़ी बहुत जमीन पे कल्टीवेशन करते थे, and sepoys is the name given to the इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी. जो भारत के सिपाही होते थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे उनको सेपोइज बोला जाता. ठीक है. उन पर क्या इफेक्ट हुआ देखिए. पीजेंट्स एंड जमींदार्स, मनी लेंडर्स, ऑल दिस वर हेवीली इफेक्टेड क्योंकि दे वर बीइंग चार्ज heavy taxes and the rules were very rigid. The rigid collection methods, उनके ऊपर बड़े heavy taxes चार्ज किए जाते, लगान लिया जाता था उनसे, लगान वसूला जाता था, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे. रूल्स वर वेरी स्ट्रिक्ट. ओके. सो व्हाट हैपेंड वाज, in order in paying continuously to the Britishers from their pocket, बार बार अपनी तरफ से पेमेंट करते करते उन लोगों ने फाइनली क्या हुआ, अपने जो उनके लैंड थे वो भी खो दिए. दे वर नाउ नॉट द ओनर्स ऑफ देयर लैंड. उन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रख दी कर्ज चुकाने के लिए, अंग्रेजों का कर्ज चुकाने के लिए, लगान चुकाने के लिए. वो अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठे. They were not now the owners of their land. They have to sell off their land. They have to forcibly give off their land to the Britishers. Okay, or to the higher authorities. Next is Indian sepoys. Indian sepoys had a big issue. उनके साथ में what was the thing? Their pay, salary, allowances, and the conditions of services were very bad. ओके. उनको जो सैलरी दी जाती थी, जो अलाउंस दी जाते थे, जो उनके काम करने के आवर्स थे, वर्किंग आवर्स थे, जो काम करवाने के जो तरीके थे ब्रिटिशर्स के इंडियन सेपोइस के
साथ में वो बहुत ज़्यादा they were in a very bad situation compared to their British soldiers. Okay, अगर हम बात करें the Indian sepoys were also working hard, even they were working more hard than the British soldiers, but still they were given the less salaries and the condition of the work was more pathetic. उनसे ज़्यादा काम लिया जाता था और सैलरी भी कम दी जाती. In 1824 what happened was Indian sepoys were taken to fought a war against Burma by the Britishers. 1824 में ब्रिटिशर्स इंडियन सेपोइज को और अपने सोल्जर्स को भी बर्मा ले गए एक फाइट एक वॉर फाइट में. बर्मा जाने के लिए उस समय इंडिया से सी रूट वाज द बेस्ट अल्टरनेट. ओके, सो इंडियन सोल्जर्स वर फोर्स टू ट्रेवल थ्रू सी. उनको समुद्र के रास्ते से जाना होता था. लेकिन देयर वर सम मिथ्स, देयर वर सम रिलीजियस बिलीफ कि if a person crosses a sea in his life then he will lost his religion, he will become impure. अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में समुद्र को पार कर जाता है तो ये माना जाता था कि वो अशुद्ध हो गया, he becomes impure. So it was not a good thing to cross the sea in those days. Okay, तो इस वजह से there was a huge upset in sepoys because they were forced to cross the sea and those who were not able to, those who refused to cross the sea in the war of Burma, they were heavily punished, they were heavily beaten. उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया. इन्होंने मना कर दिया समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए. ओके, इन 1856 बाद में आफ्टर many years during 1856, the time of which our chapter is, the British company entirely changed their rules of appointment of the sepoys. उन्होंने बहुत सारे रूल्स चेंज कर दिए कि अब जो भी सेपोए सेना में रिक्रूटेड होगा, अपॉइंटेड होगा, जो नया जो भी सेपोए भर्ती होंगे, ठीक है, उनको कहीं भी भेजा जा सकता है. इन द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड दे विल हैव टू क्रॉस द सी एज वेल. उनको समुद्र भी पार करना पड़ेगा. इट वाज कंपल्सरी. उनको पहले ही बोल दिया गया कि अगर आपको ऐसा करने में कोई दिक्कत है देन यू विल नॉट बी हायर्ड, यू विल नॉट बी अपॉइंटेड. अगर आप कर सकते हैं देन ओनली यू कैन ज्वाइन द न्यू जॉब, तभी आप नौकरी के लिए हाँ करिए, वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी. ओके, आफ्टर दिस देयर वाज अ short reforms regarding the Indian society. In the same chapter we will discuss that also. Then we will wind up this particular video explanation after taking those social reforms. Okay, after the effects on peasants, sepoys, rajas, there was the effect on Indian society, social system and religious system as well. So let's see what was the effects that were there. Okay, dear students, now coming to the last phase of this today's video lecture. We are into the last heading, responses to the reforms. See, the reforms which we are talking about are the social reforms. जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो रिफॉर्म्स लाए गए related to the religious reforms, like religious reforms and other such things. Okay, Britishers tried to interfere into some rituals, some practices which were being carried out for many years. अंग्रेजों ने कुछ उन प्रैक्टिसेस को चेंज करने की कोशिश करी जो हमारे देश में, हमारे भारत में पिछले कई सालों से चले आ रहे थे. दे ट्राई टू चेंज दोज प्रैक्टिसेस. क्या? दे ट्राई टू चेंज सती प्रथा. दे ट्राई टू इनेक्ट विडो रीमैरिज. उन्होंने सती प्रथा को बंद करने का सोचा कि सती प्रथा बंद कर दी जाए और विडो की रीमैरिज दोबारा करा दी जाए. ओके, विडोज को दोबारा रीमैरी करने का लॉ पास किया गया. ओके, सो दिस वाज ट्राई a step to change the Indian society system. Then one more thing that was happened was कि English language was slowly and steadily actively promoted in that time. English language को बहुत ज़्यादा importance दी गई उस time में. और apart from that, in 1830 Christian missionaries were promoted in India. During 1830 Christian missionaries को इंडिया में promote किया गया. They can settle down in India, they can purchase the land in India. इवन क्रिश्चियन मिशनरीज के बिहाफ पे लोगों को अपनी ज़मीनें तक वापस मिल गई जो किसी वजह से उनसे छिन गई थी. ओके, सो प्रोविजन वाज गिवन एज सच कि अगर इफ एनी पेजेंट हैज
lost his land by any reason earlier in the past, and he converts his religion, then he would be getting that land back again. Fine. In 1850 the law was passed to make the conversion even more easier. 1850s में जो कन्वर्जन का लो था उसको और ज़्यादा इजी कर दिया गया. सो दिस वर ऑल द थिंग्स दैट made a huge setback in the Indian society. People were very upset. Almost all the sections of the society were upset, whether it was peasant, whether it was sepoy, whether it was a landlord, whether it was a king or a queen. So the Britishers were really in a severe critical condition. At any time the war could have been broken down in India. Okay, thank you dear students. That's much today in this video. That's much for the explanation from this chapter. We will be meeting soon again. Till then, take care and have a good day.